Okay, so what the person over here doctor is trying to say that जब snake खुद को देख रहे थे तो उनके मन में भी ऐसे thoughts चल रहे थे क्या that I should grow my mustache a little bit or I should use a eyeshadow or mascara. Vermilion is a red color बच्चा, तो red color मतलब क्या बिंदी जैसा हम लोग बोलते हैं ना वुमेन लोग लगाते हैं, तो वो वही बोल रहे कि क्या उनको लग रहा है क्या ये सारे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं क्या. I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? And फिर वो वही बोल रहे कि मुझे कुछ पता नहीं था कि ये snake का ये कैसा था. My screen, is it visible? One second ना, यहाँ पे hang हो गया लगता है मेरे वहाँ पे. Just give me 1 minute. Yeah. So I did not know anything for certain. And then he's saying that I did not know what kind of sex was he. Was it a male snake or a female snake? I will never know, for the snake unwound itself from my arm. Yeah. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. Okay, so now what his doctor is trying to say that now अरे क्या है तेरे को, मैं सीधा बैठूं नहीं तो तेरे को क्या है. Parth, mute yourself. And then he's saying that I did not know anything for certain. He's saying that from there that the snake, sorry, he was on my lap. के वो धीरे धीरे मेरे lap पे आए, and from there he crept onto the table. He moved towards the table and then he moved towards the mirror, और वो mirror के नजदीक में जाके बैठ गए साफ. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. मुझे लगता है उनको अपना reflection एकदम नजदीक से देखना था. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went on through the door in the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. ठीक है, and वो बोल रहे हैं कि जैसे ही snake मेरे lap पे से mirror के नजदीक गया, I was suddenly a man of flesh and blood. कि मैं एकदम चार्ज हो गया, मुझे सिर्फ ऐसा दिख रहा था that I need to save myself from the snake. And I was holding my breath, कि मैं मेरी सांसें ऐसे रुक के बैठा था, and जैसे ही वो snake मेरे लैप से गया मिरर के तरफ, I just got up from the chair. I quickly ran into the veranda, and veranda का जो door था वो मैंने खोला, and जो वहां से मैं भागा हूँ, that is what he's trying to say, that from there I leapt into the yard and ran for all I was worth. कि जितना मुझसे हो सके मैं उतनी दूर वहां से चला गया. Phew, each one of us heaved a sigh of relief. Somebody asked. तो अभी हम लोग ने देखा ना ऊपर डॉक्टर ये स्टोरी नरेट कर रहे, तो जैसे ही उन्होंने बोला डॉक्टर ने और मैं वहां से भाग गया, सो एवरीवन इज लाइक हाश फ्यू, मतलब अच्छा है आप बच गए वहां से और आप वहां से भाग गए. तो एवरीवन हैड अ साइन ऑफ रिलीफ. रिलीफ बोलते हैं ना कि हाश चलो बच गया वैसे. सो एवरीवन हैड दैट काइंड ऑफ रिएक्शन. Somebody asked, doctor, is your wife very fat? तो जैसे हम लोग ने देखा, he demanded that he needs a woman to get married जो fat होनी चाहिए. तो वही वहां पे किसी ने उनको पूछा that now is your now is your wife a little bit fat as you demanded? No, the doctor said. God willed otherwise. My life companion is a thin, ready person with the gift of a sprinter. ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं, नो नो, गॉड ने मेरी नहीं सुनी उस टाइम पे, गॉड का कुछ अलग ही डिसीजन था. एंड नाउ अभी जो मेरी वाइफ है, शी इज अ थिन पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर. Someone else asked, फिर किसी और ने उनको पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? तो आपने जैसे भागा, आपने जैसे आपने बोला कि आप वरांडा से भाग गए वहां से, तो क्या आपने देखा पीछे स्नेक आपको फॉलो कर रहा था?
The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. तो जैसे ही किसी ने उनको पूछा that when you were running did you see the snake was following you, so what doctor is saying that no, I don't remember because I was running till I reached to one of my friend's house, and as soon as I reached there I changed myself into fresh clothes, I took a bath, I smeared oil onto myself, and then I wore fresh clothes. And then he's saying that from there two others to my room, and then he's saying that next day I took few of my friends to my room कि मैं वहां से मैं दो तीन फ्रेंड्स को लेके वहीं पे वापस मेरे रूम में गया बिकॉज वहां से मुझे मेरी चीजें वापस लेनी थी. बट व्हेन आई रीच देयर आई रियलाइज दैट मेरे पास इतनी सारी चीजें नहीं थे. आई हैड ओनली फ्यू थिंग्स एंड व्हाट ही सेइंग सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माय थिंग्स, क्योंकि वो ऐसे वरांडा गेट वेट सब खोल के वहां से भाग गए थे, राइट. So some thief had removed most of my things और उनको लगा कि मेरे घर पे चोरी हो गई है एंड बहुत सारी चीजें चोर ने चुरा के लेके गया. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. वो बोलते कि पूरा रूम मेरा लेके मतलब जो सारा सामान था वो सब तो वो चोरी करके ही चला गया. पूरा रूम मेरा क्लीन हो गया है, बट एक चीज ऐसी है जो चोर नहीं लेके गया खुद के साथ. And it was like a insult for me. So what was that thing? What was that? I asked. तो किसी ने उनको पूछा कि क्या था वो चीज जो चोर नहीं लेके गया. So the doctor is saying my vest, the dirty one. जैसे हम लोग ने देखा था वो आ गए थे रात को खाना खा के and then he removed all his clothes. तो उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया था कि I was wearing a vest which was dirty. तो वो वही बोल रहे कि जो मेरा जो वेस्ट था, वेस्ट कोट था मेरा, वो डर्टी था, वो चोर चुरा के नहीं लेके गया. एंड दैट वाज लाइक अ इंसल्ट फॉर मी. व्हाई डू यू थिंक इट वाज लाइक अ इंसल्ट फॉर हिम? Yes. Why do you think it was like an insult for him? He's saying na, and that was like an insult for me. Why do you think he feels that it was like an insult? बिकॉज उनका मानना है कि मैं मतलब चोर भी साफ सुथरा था कि उसको भी मेरा डर्टी वेस्ट चाहिए नहीं था. वैसे कि चोर भी कितना अपन बोलते हैं ना कितना शार्प है कि कितना ये है स्कॉलर है कि वो सब कपड़े लेके गया, बट मेरा जो डर्टी वेस्ट था वो नहीं लेके गया. वैसे द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ cleanliness के वही यहाँ पे बोला as I said that he was a person who believed in cleanliness and that is why he did not take that waistcoat along with him. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. So what the doctor is telling over here कि वो भी है ना पागल ही है, बुद्धू ही है चोर, that he could take that waistcoat though it was dirty. उन्होंने उसको वॉश करके तो वो यूज कर सकते थे. वैसे डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो ऐसे दे वर सिटिंग इन ग्रुप राइट. तो उसमें से किसी एक ने पूछा कि फिर आप नेक्स्ट डे जब गए सामान लेने को तो तब आपने देखा क्या वो snake was still there in your room? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. और फिर वो डॉक्टर क्या हंस के ऐसे बोले कि नो, उसके बाद से आज तक मैंने कोई भी स्नेक नहीं देखा. And that was a snake which was taken with its own beauty. Why do you think ऐसा डॉक्टर ने यहाँ पे बोला that was a snake which was into its own beauty? Parth, Daksh, why do you think the doctor is saying that snake was carried away with its own beauty? Because man, it can be that the snake was watching Yeah. its reflection on the mirror for a long time.
बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे देखा ना कि स्नेक खुद को अपने मिरर में, मतलब खुद को मिरर में देख रहा था, एंड दैट इज व्हाई डॉक्टर ओवर हियर इज ट्राइंग टू से दैट इवन स्नेक वाज प्रेजिंग हिज और हर ओन ब्यूटी. ठीक है. So yeah, it is, the chapter has come to an end. This book was like this session is taken. ये जो वाइकम मोहम्मद बशीर है, उन्होंने ये लिखा है, एंड ये मलयालम के एक बुक में लिखा गया था, वी अब्दुल्ला करके, एंड उनसे फिर ये वाइकम मोहम्मद बशीर ने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. Next, now let us discuss the question answer. The sound was a familiar one. What sound did the doctor hear? What did he think it was? How many times did he hear it? What and why did the sound stop? Chalo, start answering, bachcha log. The sound was a familiar one. What sound did the doctor hear? Ma'am, the doctor heard the sound of a pipe, pipe that fall down. Thumb pipe like that. Sorry, what are you trying to say? Ma'am, the doctor heard the sound of a pipe falling down. Pipe. Where was the description of pipe mentioned in the chapter? Pipe. When he says the sound is a familiar one. और वो बोलते ना एक line that people would think rat and I share the same room. So he thought that the sound was of rat, बच्चा, not pipe. Clear? Daksh, am I audible now to you? Chalo. What sound did the doctor hear? What did he think it was? तो यहाँ पे आएगा, the sound was a familiar one. What sound did the doctor hear? So the doctor heard the sound of rat. What did he think it was? So he thought that it was a rat. He could hear a similar sound, and that is when he thought that, most of the time there are, as he mentioned, that there is traffic of rat in my house. So he heard a sound of something which he thought it is of rat. ऐसे आप लोग लिखोगे. एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? तो आपको यहाँ पे चैप्टर में जाना पड़ेगा, कितने बार उन्होंने हियर किया ये साउंड. इफ यू रिमेम्बर, देखो यहाँ पे पहले तो वो कुछ थॉट कर रहे थे, फिर उनको वापस साउंड आया, फिर वो कुछ सुन रहे थे, फिर ही कुड हियर एनी नॉइज. तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक ही कुड हियर दैट नॉइज? एनीवन? Ma'am, 5 to. चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा? यू नीड टू मेंशन इट बच्चा, यहाँ पे कि आप कैसे बोलोगे. ये देखो, the sound was a familiar one. So you need to mention that doctor lived in a room which was full of rats, right? उन्होंने बोला that I lived in a room which was full of rats, and he said that there is always traffic of rats in my room. बराबर. तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट पे ऐसे लिख सकते हो. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या, मतलब सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, that what sound did the doctor thought doctor hear? तो ऐसे बोल सकते हो he heard the sound of rats, because उनको लगता था कि मेरे घर पे rats है. तो ये आवाज किसकी होगी? ये rats की ही होगी. But what is the next question? What did he think it was? तो यहाँ पे आएगा he heard, he thought it was rats. How many times did he hear it? तो आपको लिखना पड़ेगा that he heard the sound, I guess. आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते. यू नीड टू गो टू द चैप्टर अगेन. व्हाट बच्चा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैम, उसने वो साउंड 3 to 4. थ्री टाइम्स सुना. आपको अजम्पशन नहीं देना, एकदम परफेक्ट नंबर देना है. तो ही हर्ड दैट साउंड थ्राइस. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बार वो थॉट कर रहे थे. See, if you see this, see,
Yeah, he started reading book and then he's saying starting में बोला था उन्होंने कि voice can be heard, फिर यहाँ पे उन्होंने again बोला again I could hear the sound, and यहाँ पे वापस उन्होंने बोला that again I heard a sound, और फिर इसके बाद डायरेक्ट उनके ऊपर snake आया, तो thrice he had listened he can hear that sound, कितने बार सुना उन्होंने? 3 times सुना. Clear यहाँ तक? Yes, So you ma'am. need to write that the sound was visible thrice. 3 बार उन्होंने सुना. And फिर next question क्या है? When and why did the sound stop? तो कभी sound stop हुआ? It stopped suddenly, right? जब उनको लगा कि rat had seen a snake. तो आप लिख सकते हो that when rats had seen snake, the sound stopped. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. What two important and earth-shaking decision did the doctor take while he was looking into the mirror? चलो बोलो क्या दो decision उन्होंने लिया? What was the first decision which he has taken? Ma'am, Ma'am, the he has mustache. told that he will Wait, make a mustache wait, and wait. shave. Daksh was trying to say something. Daksh, what were you trying to say? बोलो. Ma'am, he tried to grow a mustache. Yeah, the first thought जो उनके mind में आया that he said that I would daily shave and I would create a thin mustache. The first thought उनका वो था, thin mustache वाला. Second thought क्या था? What was the second thought which he had? पर आपको ये क्लियरली लिखना है. यू नीड टू राइट इन द परफेक्ट सेंटेंस. यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट यहाँ पे यू विल नीड टू राइट द फर्स्ट थॉट ही डिसाइडेड वाज टू शावर डेली, सॉरी शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच. व्हाट वाज द सेकंड थॉट बच्चा लोग? Ma'am, he would keep his attractive smile. या दक्ष बच्चा आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है मेरे को. He decided to always keep that attractive smile on his face. तो Right? तो He मैम said वो that थर्ड वन नहीं आएगा जिसमें उसने बोला आई विल मैरी टू अ वुमन डॉक्टर, वो वाला नहीं आएगा मैम? या पर यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट पूछा है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ये दो थॉट्स ही थे, तो इट्स फाइन. वो थर्ड वाला है ना, वो थॉट तो वो नहीं लिखोगे आप क्योंकि वो थर्ड थॉट था. ओके. Okay. Next, I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later, he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he smiles? Second, when he smiles again, and in what way do his thoughts change in between and why? तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, समझा क्वेश्चन? Yes, जब ma'am. उन्होंने फर्स्ट टाइम थोड़ा स्माइल बहुत. किया, हाँ, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम स्माइल किया उनके थॉट्स क्या थे, फिर जब उन्होंने सेकेंड टाइम अगेन स्माइल किया सब डेंजर को भुला के, तब उनके थॉट्स क्या थे? तो दक्ष बच्चा कैन यू एक्सप्लेन? आपने बोला ना आपको क्वेश्चन समझा. आई हाँ मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो आपको दिखेगा. What was the doctor's opinion about himself when he first smiled? जब उन्होंने स्माइल किया तो उनका ओपिनियन क्या था? He was admiring himself, right? That he was saying that I should groom properly and I should always admire myself, क्योंकि उनका मानना क्या था that मैं एक डॉक्टर हूँ, right? He always thought that he would admire his looks and his मैम ही इज अ profession. बैचलर. Yeah, तो वही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. दैट ही सेड दैट ही नीड टू एडमायर हिमसेल्फ. उनके प्रोफेशन के बारे में वो बोलते थे कि या मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैचलर हूँ. तो ये सारा पॉइंट कब आएगा? फर्स्ट टाइम आएगा जब उन्होंने स्नेक को नहीं देखा था. स्नेक देखने के पहले की बात है ये. एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन ही स्माइल्स अगेन. यहाँ पे लिखा है आई फॉरगॉट माय डेंजर एंड स्माइल feebly back at myself. So this was when he knew that snake is on me, but he forgot that danger and then he smiled. उस टाइम पे उनका थॉट क्या था? मैम she had no time to cry or हाँ, she नहीं, डॉक्टर है ना वो. Helpless, because he was helpless.
So उनको उनको किस पे हंसी आ रहे थे? बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस एंड ही थॉट ही वॉज फुलिश. यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट अ फुलिश स्टूपिड डॉक्टर आई वॉज. तो वो सारा पॉइंट आप लिखोगे. या so वो पॉइंट आ जाएगा कि he thought he was very helpless and foolish doctor, and that is why he started laughing. He laughed on his foolishness and his helplessness. समझा? Yes, miss. Okay, next. The story about a frightening incident is narrated in a humorous way, right? कि ये एकदम डरावनी टाइप स्टोरी थी, स्नेक थे, बट वो एकदम ह्यूमरस, एकदम हंसी में उन्होंने एक्सप्लेन किया. जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया that I am a bachelor, I need to look at myself. That was, in a funny way. So what makes it humorous? Think of the contrast if it present between dreams and reality. सम ऑफ देम आर लिस्टेड. कि क्या ऐसी चीज वहां पे मेंशन थी पूरे स्टोरी में कि जिसने स्टोरी को ह्यूमरस बनाया. द फर्स्ट पॉइंट इज द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज. सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, उसके ऊपर आपको लिखना है. जैसे कि मनी हो गया, पोजेशंस हो गया, तो उनकी कौन कौन से पोजेशंस थे या मनी रिलेटेड उनका क्या थॉट था? मैम मतलब उनको एक ऐसे वुमन डॉक्टर को मैरी करना था जो बहुत रिच हो. हम्म. फिर what else, right? The kind of person the doctor is in terms of money. देखो बच्चा, आपको डॉक्टर के बारे में लिखना है, तो मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग ने देखा ही was staying in a small house. It was a rented house, and since he had just started practicing, practicing medical, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, and he just had 60 rupees. तो पूरे स्टोरी में कहीं पे भी जहाँ पे मनी रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया होगा ना डॉक्टर का, वो सारा यहाँ पे आप लिखोगे. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? बच्चा लोग दोनों को क्वेश्चन समझ रहा है? यस मैम. ओके. सेकंड क्या पूछा है? रिगार्डिंग हिज पोजेशंस, कि उनके कौन कौन से पोजेशंस थे. तो वही सारे तीन थॉट्स के उनका क्या क्या मानना था, जो उनके तीन अलग अलग टाइप के थॉट्स आए. दैट आई वुड ऑलवेज कीप दैट स्माइल ऑन, और आई वुड ऑलवेज शेव, और आई वुड मैरी टू अ पर्सन जो फैट हो. वो सारा जो उनके पोजेशंस थे, वो ये सारे में आप लिखोगे. ठीक है. नाउ द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, उनको कैसा बनना था अपीयरेंस में. तो अपीयरेंस में हम लोग ने देखा ही वांटेड टू बिकम हैंडसम, ही वांटेड अ थिन मुस्टैच. तो अपीयरेंस से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे. अंडरस्टैंडिंग? गाइस, आर यू गेटिंग इट? एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? एम्बिशन क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? Miss, what is the doctor's name? डॉक्टर का यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना बच्चा, डॉक्टर का नाम ही मेंशन नहीं किया पूरे में, सिर्फ ऐसे बताया दैट होम्योपैथ डॉक्टर था. स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा ना, नरेशन में सिर्फ ऐसे बताया दैट आई वाज अ होम्योपैथ, वैसे उन्होंने बताया अपना डिस्क्रिप्शन. सो देयर इज नो एज सच नेम मेंशन ओवर हियर फॉर द डॉक्टर. इट्स जस्ट डॉक्टर, डॉक्टर, खाली डॉक्टर ही मेंशन किया है. समझा? तो वैसे आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखने हैं. जैसे यहाँ पे वापस पूछा है, सेकंड इज द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, तो उनको कैसे टाइप के पर्सन को मैरी करना था? अगेन अ वुमन हु इज फैट. व्हाई? बिकॉज अगर उन्होंने कोई गलती की, इफ ही मेक्स एनी सिली मिस्टेक्स एंड व्हेन ही रन्स आउट, दैट वुमन शुड नॉट बी एबल टू रन बिहाइंड हर. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू नीड टू मेंशन. द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, बट फिर हम लोग ने देखा लास्ट में जिनके साथ उन्होंने एक्चुअल में मैरी किया, that person was a thin woman. He said like कि गॉड का विश कुछ अलग ही है, and that she is very thin. तो वो सब आप यहाँ पे लिखोगे. Are you guys getting it? What you need to write?
both of you? Yes, ma'am. Okay, so this one sub question 3 would be your homework. ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये आप खुद से होमवर्क में लिखोगे, एंड ये सारा तो आपको लिखना ही है, ये पूरा पार्ट, ऑल ऑफ दिस वुड बी योर होमवर्क. अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने डिस्कस कर लिया, आपको सिर्फ एज अ नोटबुक में लिखना है. Okay. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, चलो. So we can end for this session. You guys can leave any doubt. दोनों में से किसी को कोई